there are two inventors. तो दोनों का जो नाम है, एक का है रॉबर्ट, एक का है रोहाका. दोनों के ही नाम पे R करके दिया गया है. And it is a language which was what we call invented in the year 1990s, like at that time when internet was growing. और ये पहले, इसके पहले अगर हम हिस्ट्री में जाए तो एक एस नाम की लैंग्वेज थी, एस लैंग्वेज स्टैटिस्टिक्स के बेस्ड ऑपरेशन के लिए एस प्लस आई एंड देन दिस आर लैंग्वेज केम एंड द फाइनल स्टेबल वर्जन फॉर पब्लिक इन 1995 ये अवेलेबल हुआ और फिर लोगों ने धीरे धीरे यूज किया. This language R has its own inbuilt community like Python is having. There are more than 1 lakh packages that support this R language. R is the language of data science. Generally we call it as R is the language of data science. All the statistical analysis, all the data visualization, all the graphical reporting, all the machine learning algorithms, even all these things that we can do in Python is available with R. तो ये थोड़ा सा बेसिक है. तो अगर आप एक स्लाइड चाहेंगे तो